state of Uttarakhand, change has been brewing. Thanks to the different science and technology-related interventions that was introduced by the Dehradun-based Himalayan Environmental Studies and Conservation Organization, HESCO, in the Bharwa Katal and Maldevta villages of the region. One such intervention was that of reviving the traditional water mills. The native people of this Himalayan region use an indigenously designed water mill locally called as the gharat. The gharat is made from the natural resources that are easily available in the area and operates through the water force coming from glaciers, perennial streams and rivulets. It is undoubtedly an environment-friendly source of livelihood. Since the last few decades, the importance of these indigenous water mills reduced due to the increase in use of diesel and electronic engines. But efforts made by HESCO and DST introduced the people of the region to the modern incarnation of the water mill. These days, the water mill is run by using two turbines, which in turn powers the grinding machine to grind all kinds of flour. घराट उसे वाटर मिल के नाम से जाना जाता है। घराट पिछले कई समय से चला आ रहा था, तो उसमें कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा था। तो तब ये हेस्को का जो उसमें रोल हुआ कि विज्ञान एवं तकनीकी के माध्यम से टरबाइन को चेंज किया। जो लकड़ी की टरबाइन थी उसको हमने रिप्लेस किया MS स्टील में, और 3 डिफरेंट टाइप की हम लोगों ने अलग अलग हेड के लिए 3 डिफरेंट टाइप की टरबाइन बनाई, जो कि लो हेड, मीडियम और लार्ज हेड के लिए अलग अलग तरह की टरबाइन को हम इस्तेमाल करते हैं। और पहले इसको सिर्फ हम डिहस्किंग के लिए या ग्राइंडिंग के लिए यूज़ करते थे। आज ये मल्टी एप्लीकेशन है। डिहस्किंग जहाँ एक तरफ होती है, वहीं ग्राइंडिंग भी इसमें होती है, पावर जनरेशन का भी ये काम करती है, ऑयल एक्सपेल भी करती है और कॉटन कॉम्बिंग भी करती है। तो इसकी अब मल्टी एप्लीकेशन हो गई, जिसको कि घराटी बहुत अच्छे तरीके से अब यूज़ कर रहे हैं। These modernized water mills are not only a great example of self-reliance, but also of the relief it offers to the local people who no longer have to travel far and pay a higher price for their milling. Plus, it's a reliable source of livelihood too. Keeping up with the modern times, a small restaurant has also been constructed outside of the gharat, making it multi-purpose. There is provision for tea, coffee, and cold drinks. It also sells products sourced from local women's group and has aptly been named Mill Mall. So not just the owner, the income of the women's group has also increased. ये पहले से हमारे ग्राम सभा में हेस्को वाले वाटर मिल लगा चुके हैं, जिसमें कि है धान की कुटाई होती थी, झंगोरा भी और मंडवा भी, गेहूं की पिसाई भी और मसाले की भी पिसाई होती थी। मगर दैविक आपदा के कारण वो जो मिल मॉल है वो बह गया था। तो मैंने उसी हिसाब से देख के यहाँ पे हेस्को के माध्यम से इसको 2017 में काम शुरू किया। इसका इन्होंने टरबाइन प्रोवाइड की है, और जैसे पीछे बैक साइड में जो भी इनके उपकरण हैं वो भी प्रोवाइड किए हैं। पहले तो इसमें लकड़ी की टरबाइन होती थी, लकड़ी के जो फट्टे होते थे उनको बना के मिस्त्री से उसको लगाया जाता था। मगर अब ये दूसरे प्रकार की, इसमें सारा लोहे का लगा हुआ है मैडम। अब ये बिल्कुल जो है काफ़ी साल चल भी जाती है। पहले वो जो साल 2 साल में सड़ जाती थी, इसका कम से कम मेरे ख्याल से 5 साल से तो मुझे ही हो गए तब से चल रही टरबाइन। तो काफ़ी मजबूत भी है और मेंटेनेंस का खर्चा भी कम। यहाँ पे गेहूं का आटा हो गया, मंडवाई का, मक्की का आटा तो मैं बेचता ही हूँ, पिसाई भी करता हूँ। अपना खुद मैं गेहूं ला के पिसता भी हूँ, आटा बेचता हूँ। और जो गांव से जो जैसे महिलाओं का समूह बना हुआ है, जैसे हल्दी हो गया, अचार, जूस हो गया, तो पापड़ वगैरह बनाते हैं लोग, और मसाले हो गए, ये भी बेचता हूँ दुकान में, ताकि जो गांव में जो संस्था है उनका भी फ़ायदा हो जाता है। यहाँ पे बिक जाता है सामान यहाँ दुकान पे। बाहर मैंने रेस्टोरेंट खोल लगा एक छोटा सा, इसमें चाय, मैगी, कभी चाउमीन ऑर्डर पे बनाता हूँ। चाय तो पर डे ही बनाता हूँ। मेरी जो इसमें आमदनी है, पहले तो 15-20 हज़ार थी, अब बढ़ गई है थोड़ा सा। पहले चक्की भी एक थी, अब 2 हो गई है, तो इसमें 20-25 हज़ार रुपये कमा लेता हूँ। Revival of the traditional water mills Kharat is in a way part of HESCO's concept of developing integrated model villages.
Bharwa Katal is an integrated model village developed by HESCO with the help of Department of Science and Technology. Through different interventions and with the participation of people from the community, the village developed into a model village. Take for instance agriculture. 85% of the people here are dependent completely on agriculture. Hence, location-specific and improved varieties of seed were periodically provided to the villagers based on crop season and climatic condition. पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन नहीं हुए, लोग वही ट्रेडिशनल सीड यूज करते हैं, प्रोडक्टिविटी लो थी। जब हम भरवा काटल में आए तो हमने देखा कि इनकी प्रोडक्टिविटी नेशनल लेवल से भी बहुत कम है और ना इनके पास कोई टेक्नोलॉजी है प्रोटेक्टेड वेजिटेबल कल्टीवेशन जैसी, वर्मी कंपोस्ट जैसी टेक्नोलॉजी नहीं। हम एक कंप्लीट हेस्को की तरफ से टेक्नोलॉजी पैकेज लेके आए। एक तो हमने इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ सीड से इंट्रोड्यूस की जिससे इनकी प्रोडक्टिविटी लगभग जस्ट डबल हुई। दूसरा हमने वेजिटेबल कल्टीवेशन में था, सोयल को टेस्ट किया तो पता चला यहाँ वेजिटेबल बहुत अच्छा हो सकता है, तो हमने प्रोटेक्टेड वेजिटेबल कल्टीवेशन जो पॉली हाउस टेक्नोलॉजी थी उस पर गाँव वालों को ट्रेंड किया और उसको उसमें है जिससे इनकी आमदनी बहुत अच्छी आमदनी बढ़ी और पहले ही सब्जी बाज़ार से ला के खाते थे, अब ये बाज़ार में बेचते भी हैं। तीसरा ये था कि क्योंकि ऑर्गेनिक स्टेट कहा जाता है और हम लोगों को होना भी चाहिए, इसलिए हम लोगों ने इनके वर्मी कंपोस्ट पूरे गांव में इंट्रोड्यूस किया। पहले इनको प्रशिक्षण दिया, फिर वर्मी कंपोस्ट किया। अब लगभग सारे गांव में ये वर्मी कंपोस्ट ही यूज करते हैं। इरिगेशन का, क्योंकि आप अगर ध्यान दें तो पहाड़ का मैक्सिमम लैंड अनइरिगेटेड होता है जिससे ये एक ही फसल ले पाते हैं। हमने छोटे छोटे टैंक बनाए और इरिगेशन की सुविधा बढ़ाई जिससे कि ये पूरे वर्ष जो है कृषि का आमदनी ले सके। और एक इससे सबसे बढ़िया बात ये रही कि माइग्रेशन लोगों का जो बाहर जाते थे उसके लिए या अपने खेत की तरफ ही रहते हैं और अपने खेत की तरफ रहे, लगभग 10% तक माइग्रेशन भी कम हुआ है। अगर विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात करें तो इस गांव में हमने सारी वो टेक्नोलॉजी जैसे वर्मी कंपोस्ट हुई, नेटिव कंपोस्टिंग हुई, थ्रेसिंग हुई, लाइन सोइंग हुई, वीडिंग हुई, सारी टेक्नोलॉजी से महिलाओं को ट्रेंड किया और अब ये गांव एक पूरे इलाके के लिए उदाहरण बना हुआ है। लोग देखने आते हैं कि इस गांव में एग्रीकल्चर को कैसे करते हैं। और गांव में हमारे एसएनटी इंटरवेंशन से पहले सब्जियां बाहर नहीं जाती थी, अब लोग सब्जियां बेचते हैं और वैल्यू एडिड प्रोडक्ट भी इस गांव के बड़े प्रचलित हैं। Polyhouse technique is a protective cultivation method that the villagers were introduced to. It enhances production quality and profit margin to meet the demands of vegetables. For this, a polyhouse of about 900 square feet was installed at 3 locations in Bharwa Katal. पॉली हाउस में हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। उसमें पहले तो हम साग सब्जी सब बाज़ार से लाते थे, पर जब से पॉली हाउस लगाया उसमें हमें बेमौसम की सब्जी उगाते हैं और अच्छा घर में खाने के लिए भी होता है और अच्छी हम आमदनी भी कर लेते हैं उसमें पॉली हाउस में। Horticulture related activities like mushroom cultivation also got a boost here. A low-cost mushroom hut was erected and farmers were introduced to button and dhingri variety of mushrooms for cultivation. The product was directly sold by farmers in the local market. Similarly, help was also provided for water harvesting by constructing LDPE with 50,000 litres of capacity. These water tanks are now being used for irrigating the land and growing crops for commercial purpose as well. हमारे खेतों में पानी नहीं जाता था नीचे, जैसे बरसात में तो हो गई खेती, गर्मियों सर्दियों के टाइम पे नहीं होती थी। फिर टैंक लगवाया तो अभी तो बरसात में भर जाता है ये, तो बाद में जैसे बरसात नहीं होती तो हम पाइप लगाते हैं, फिर आगे क्यारियों को सिंचित करते हैं। फिर होता है गर्मियों में काफ़ी गेहूँ भी होते हैं, उसके बाद और चीज़ भी बोते हैं हम, धनिया वगैरह, तो वो भी होता है, तो सिंचाई हो जाती है। जैसे गर्मियों में और जगह से पानी नहीं होता तो यहाँ से हो जाता हमारा। Concept of biofarming was also introduced to the community here.
where several other ways of generating income was promoted. For instance, by introducing new variety of goats and by adopting better practices of goat farming. Not just goat farming, but poultry was also introduced as an alternate model of income generation. Two ways of poultry farming was promoted: backyard poultry farming and commercial poultry farming, with commercial farmers earning as much as 10,000 to 12,000 per month. Then there is fish farming too, which provides an additional source of income to the farmers in hills, as fish can be produced locally and is also a part of their diet. Under the project, two models of hill fish farming have been introduced: model integrated fish farming using polytanks in mid-hill region and model backyard ornamental fish farming. Construction technique and specimens for these were sourced from Directorate of Cold Water Fisheries Research, Bhimtal. The initiative is showing positive and encouraging results. Then there are energy-related interventions too, like biogas, Daksh Chulha, and low-cost water heater. Such knowledge-based and technological interventions are very much needed. They not only empower these communities and increase the effectiveness of their development efforts through informed decision-making, they also help in sustainable development of these regions while being mindful of keeping a low-carbon footprint.